Children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a new chapter, chapter number 10, Sun as a Natural Resource. In this chapter, we will learn about sun, its effect of sun, then sources of energy and conservation of energy. So students, you all know what is sun. तो sun से क्या हमें क्या मिलता है? Everybody knows that from sun we get heat and energy, isn't it? It is a huge ball of fire. तो sun को क्या बोलते हैं? It is a huge ball of fire and it is actually a star and it is seen in the sky as the brightest object, isn't it? So sun is a very big ball of fire and it is known as the star and it is brightest object in the sky. And what we get heat and light from the sun, isn't it? Now sun is a living thing or non-living thing? Sun is a non-living thing, but we get what? We get abundant amount of heat and light from sun. So the energy, that is heat and light, what we are getting from sun is called as the solar energy. तो आपको पता है सन सबसे बड़ा एक स्टार है जो एक फायर बॉल की तरह लगता है और सन से हमें क्या मिलता है? हीट एंड लाइट. सो दिस हीट एंड लाइट इज़ नोन एज एनर्जी. क्योंकि ये हीट एंड लाइट से हम क्या करते हैं? हम इस हीट एंड लाइट से बहुत कुछ काम कर सकते हैं. तो दिस इज़ नोन एज एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज द solar energy. The energy we get from sun is called the solar energy. So this solar energy, it is easily available. तो ये solar energy हमें हमेशा मिलता रहता है. जब तक sun है तब तक energy, heat and light energy हमें मिलता ही रहेगा. Okay, and it is not polluting the environment. So it is the cleanest source of एनर्जी. तो इससे क्या पोल्यूशन नहीं होता है, गंदगी नहीं होता है हमारे आसपास, है ना. तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? इट इज़ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सन फॉर लिविंग थिंग्स? सो फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स सन इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज विदाउट सन we are not getting, people or animals are not getting what? Heat and light. Will not get heat and light. Then without sun plants cannot grow. Okay, so if plants cannot grow, then plants will be not there. If plants is not, then we will not get food. So again animals and human beings will be also not there, है ना. तो यदि सन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे. प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा? प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं करेगा. प्लांट्स फ्रूट प्रिपेयर नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे, है ना. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स व्हाट दे विल ईट? दे विल नॉट ईट एनीथिंग. दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड फूड. सो एज दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड फूड, क्या होगा? दे विल डाई विथ हंगर. भूख से मर जाएंगे, है ना. सो सन इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. ओके, so how plants are making food? Plants are taking sunlight, then carbon dioxide and water from the environment, and they are preparing food in their leaves. So this process is called as photosynthesis. So plants store solar energy in their roots, stems and fruits as food. And we are eating roots, stems and fruits of plant, isn't it? तो हम क्या खाते हैं? हम प्लांट से ही सब कुछ लेते हैं ना. वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो या लीफी वेजिटेबल, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट. एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. So human beings and animals get solar energy indirectly by eating plants and plant
products. Now what are the various uses? अभी सन एनर्जी का हम क्या क्या वेरियस यूजेस करते हैं? तो सबसे पहले तो प्लांट्स यूज़ करता है, ओके. देन अदर थिंग्स व्हाट वी आर यूजिंग इट फॉर. तो सोलार एनर्जी देखिए, सोलार वाटर हीटर और गीज़र यूज सोलार एनर्जी टू हीट वाटर. तो आपने देखा होगा कि आजकल हर एक बिल्डिंग में या हर एक बंगलों के ऊपर सोलार पैनल्स होते हैं जो कि क्या करता है, सोलार रेज को, सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, वो एज ए सोलार हीटर और गीज़र का काम करते हैं, ठीक है. तो so this is one of the use of solar energy. Now you can see the pictures over here. So solar energy, these are the solar panels. बिल्डिंग्स के ऊपर आपको दिखाई देगा. ये क्या करता है, इस सोलार एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एज ए हीटर इट इज़ हीटिंग द वाटर. देन व्हाट एल्स वी कैन डू, सोलार रूफ पैनल्स कंटेन मेनी सोलार सेल्स that can absorb solar energy to produce electricity. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सोलार पैनल्स जो होते हैं उसमें हीट एनर्जी होता है, फिर उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. देन वी वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड इन द सन. तो हम जब भी गीले कपड़े होते हैं वो भी हम under sun we dry them, isn't it? Then food is cooked using the heat of the sun. So यहाँ पर देखिए सोलार कुकर, ये सन के हीट से क्या होता है, हम खाना कुक कर सकते हैं. देन पिकल्स एंड चिप्स, सो अचार और जो पोटैटो चिप्स वगैरह होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम काट के मसाले लगा के क्या करते हैं, उसे बाहर सन के अंदर सुखाने को रखते हैं. देन सोलार एनर्जी इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर. देन ग्रेन्स आर सन ड्राइड टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो जैसे कि आपको पता है फार्मिंग, जो क्रॉप्स हम निकालते हैं उसे भी हम सन ड्राई करने के लिए रखते हैं और सुखाने के बाद हम उन ग्रेन्स का क्या करते हैं, उन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और बाद में वो उसको हम एज ए फूड वी यूज़ देम, ओके. देन बिकॉज ऑफ सोलर सन एनर्जी ओनली वी कैन मेक सॉल्ट. तो सी वाटर में जब सन की लाइट पड़ती है तो क्या होता है, द वाटर गेट्स इवापोरेटेड and the salt is left behind. So it is one of the use of solar energy. Then solar energy also helps to evaporate water and falls as rain. So solar energy से ही क्या होता है, सन के हीट से क्या होता है, इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन होने के बाद क्या होता है, ऊपर स्काई में कंडेंसेशन होता है, and because of that rain happens, okay. So it is also important in water cycle. Now it is the natural source of energy present in abundance on earth. So कौन सा माउंटेन है, रिवर है, सन है, फ्रूट जूस है, it will be sun. So effect of sun on season. So depending upon the heat and light of sun, the surface of earth warms up and causes changes in weather. So in some places what happens, तो जिस जगह पे क्या होगा, सन का रेज हॉट होगा, बहुत ज़्यादा सन का हीट एंड लाइट पड़ता होगा, इससे क्या होगा, वो प्लेस में क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. एंड दैट गिव्स यू द चेंज इन सीजन, दैट इज समर सीजन, where the heat and light of the sun is hotter, isn't it? And sometimes what happens, some of the parts of our earth get less amount of heat and light. That time it will change to winter season, okay. So 3 main seasons are there depending on season किस पे रहता है, revolution of sun पे. ये अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना. सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है तो आपको मेन 3 सीजन मिलता है, दैट इज समर, मॉनसून एंड विंटर. दीज आर द मेन 3 सीजन. देन स्प्रिंग एंड ऑटम कम इन बिटवीन दिस सीजन,
Okay, so summer, winter and monsoon, 3 seasons. Spring and autumn is the season which comes in between, and depending on this season we wear clothes. So देखिए यहाँ पे सीजन का एक आपको यहाँ पर पिक्चर दिया गया है. समर में देखिए लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, देन कम्स योर स्प्रिंग सीजन. Okay, then comes your winter, then autumn, then monsoon. Okay, so summer season कौन सा है आपका पता है आपको? जून से लेके सितंबर तक, सॉरी मई से लेके मार्च से लेके मई तक is your summer vacation, isn't it? Summer season. So summer season is from March to May. Okay, then your monsoon means rainy season कब आता है? जून के एंड में आता है. तो you may take June to September. Okay, autumn is October season. दशहरा जब आती है ना, वो उस टाइम पे कैसे रहता है? गर्मी, थोड़ा गर्मी रहता है और तुरंत क्या आ जाता है? विंटर. सो विंटर इज कहाँ से? नवंबर टू फेब, isn't it? Now this Feb to March, now अभी मार्च महीना है ना हमारा, तो ये स्प्रिंग सीजन है ना. तो इस तरह से अब गर्मी आने वाली है, तो देखिए गर्मी. ठीक है, सो दिस ऑल आर द मंथ्स वेयर यू हैव डिफरेंट सीजन. ठीक है, समर मंथ में बहुत गर्मी होती है इसलिए कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. मॉनसून में रेनिंग सीजन, देन टू मच दिस थिंग इज़ देयर, सो रेन इज़ देयर, सो वी आर यूजिंग व्हाट? We are using the umbrellas, we are using raincoats, isn't it? Then autumn, we also use here comfortable clothes. Winter, we use woolen clothes. And spring season also we use comfortable clothes. Then next is the source of energy. The resource from which we get energy are called as the source of energy. Now renewable source of energy, the source of energy which we can get again and again. So the energy sources that we can use again and again and we can get it in abundance. So solar energy, जो solar energy है वो किस तरह का energy है? renewable sources of energy. Okay, so which can be used again and again and we can get it abundantly. बहुत हमें क्या, हम बार बार इस सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, है ना. देन अदर सोर्सेज आर रिन्यूएबल सोर्सेज आर योर विंड एनर्जी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक मीन्स water, the energy that is obtained from running water, that is called as hydroelectric energy. So all this energy can produce electricity. Now next source of energy is non-renewable source of energy which cannot be used again and again. एक बार इस energy को हमने ख़त्म कर दिया तो we cannot use it again. So these are limited source like our coal, petrol, natural gases. So limited amount we can use it. तो ये हमें बार बार नहीं मिलेगा. जितना हमारे एनवायरनमेंट में है, जितना हमारे अर्थ में है, उतना ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए हमें ये बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर लिमिटेड. So we cannot use it again and again and we should always use it carefully. So you can see the diagram of non-renewable sources of energy. Now classify the following into renewable or non-renewable sources of energy. So coal is non-renewable, cannot be used again and again. Natural gas is non-renewable. Then wind energy, renewable. Petrol, non-renewable. Hydroelectric energy, renewable. And solar energy is
renewable sources. Now what about the conservation? Conservation means to save the energy. Conservation of energy means to save the energy, that is not to use it in a careless manner. So we should always save the energy to prevent it from wastage. Okay, so how we can conserve energy, how we can save energy? Save, SAVE, how can we save energy? So whenever you have no use of light or fan, you should always put off the fans and lights when it is not in use. Then ऑलवेज टर्न ऑफ द लाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम. तो जब भी सुबह के वक्त होता है उस समय आप ये ध्यान में रखिए कि लाइट्स ऑन ना कीजिए. यदि आपको बहुत ज़रूरी है तो ही आप लाइट्स ऑन रखिए. देन LED light bulbs and tubes should be used so that they can last long and use less energy. So this will again conserve your energy. Then रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आप यूज़ करते हो तो उसका डोर क्लोज रखिए, बार बार ओपन मत कीजिए, सो दैट यू कैन सेव एनर्जी. देन ऑलवेज रन ए फुल लोड इन डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन जब भी आप यूज़ करते हो तो फुल वॉशिंग मशीन में कपड़े होंगे तो ही आप यूज़ कीजिए. यदि थोड़े कपड़े हैं तो आप वॉशिंग मशीन चलाइए मत. आप ट्राई कीजिए कि आप उसे हैंड वॉश ही करते हैं. वॉशिंग मशीन जब भी आप चलाते हो तो यू मेक इट श्योर दैट बहुत सारे कपड़े हो तो ही आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कीजिए. ठीक है. फिर ड्राई योर क्लोथ्स इन द सन इंस्टेड ऑफ ड्रायर. तो जब भी समर रहता है उस समय आप देखते हो कि सन का हीट एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, तो दैट टाइम ट्राई टू यूज़ द सनलाइट टू ड्राई योर क्लोथ्स. डोंट यूज़ ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, क्योंकि ड्रायर में डालोगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाता है. ठीक है. देन वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अकेले किधर जाना है आपको तो आप बस या ट्रेन से ही जाइए, सो दैट योर पेट्रोल एंड डीजल कैन बी सेव्ड. देन यूज़ नेचुरल गैस फॉर कुकिंग. So try to use your natural gas. Then use renewable energy sources like solar energy, wind energy to produce other useful sources of energy. This can help avoid the use of non-renewable energy sources. So try to put up the solar panels in your building so that from that we can have hot water, so that we can use less गीज़र्स यूज़ करने नहीं करें. इसके लिए हमें हमारे सोलर पैनल को यदि हम बिल्डिंग्स पे लगाएंगे तो जब भी हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हीट ऑफ द सन से ही हमें गर्म पानी मिल जाएगा. तो इससे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेव होता है. Okay, so this is how you can save your energy, and that is called as conservation of energy. So students, just go through this chapter, read it well. This is very easy chapter. So from the quick look you can easily find out what we have learnt in this chapter, and please go through the different वर्ड्स दैट वी हैव कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है, यही न्यू वर्ड्स है जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं. तो ट्राई टू गो थ्रू दिस न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड हैव ए क्विक लुक ऑफ दिस चैप्टर. सो इट इज़ वेरी इजी, you know all these things. So try to read the chapter carefully and answer the questions given in your exercise. Thank you.